एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नीडेड इन ए प्रोटीन टू बी एन इंट्रिंसिक इन ए मेम्ब्रेन इज। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है और हाउ इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। ये जो लिपिड जो प्रेजेंट है, इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर, दोनों लेयर का लिपिड है। And here there are two types of protein, like one is the extrinsic protein and other one is the intrinsic protein. ये जो intrinsic protein जो present है, it is embedded in the plasma membranes bilayer. So ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि ये intrinsic protein का कौन सा नेचर होना चाहिए, and the options are hydrophilic, hydrophobic, highly embedded and linear. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कौन सा नेचर का है, इट इज हाइड्रोफोबिक। ये अंदर का लेयर जो प्रेजेंट है, इट इज हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स इट कैन नॉट एक्सेप्ट द वाटर। इन लोगों को वाटर से डर है। सो ये जो प्रोटीन का नेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। ये पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है, ये कौन से प्रॉपर्टी के लिए ये चेंज हो रहा है। सो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सैचुरेटेड एज वेल एज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज हैविंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होता है। और इनका दे आर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेशन, दे आर स्टिफ, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी। ये जो है फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कब होगा, जबकि इसका व्हेन दिस लिपिड विल हैव द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक ए किंक, इट विल हैव किंक लाइक स्ट्रक्चर, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये जो फैटी एसिड जो प्रेजेंट है, इट इज हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन देम। So the answer here is option number A, change in saturation level of fatty acid. अगर ये saturated fatty acid होगा, then it will not be in the fluid form, they will be in the rigid form. और ये अगर unsaturated fatty acid होगा, then it will in the liquid form. अगर ये होगा unsaturated fatty acid, then ये क्या होगा, then it will have the fluid like structure. Okay, now let's discuss the next question. ये बोल रहा है कि plants growing in cold environment generally have high. ये बोल रहा है कि जो plants जो present होते हैं, अगर वो cold environment में present है, तो उनकी nature क्या होगा। Okay, उनके nature नहीं तो उनका जो nature है, उसके वजह से उनके cells में कौन सा चीज ज्यादा present रहेगा। Okay, the first one is cholesterol, next is saturated fatty acid, C is unsaturated fatty acid, D is long chain fatty acid. Try to solve this question. जब कोल्ड क्लाइमेट प्रेजेंट है, देन उसमें क्या होगा, वो स्टिफ हो जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, वो स्टिफ हो जाएगा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए, क्योंकि इट नीड्स टू बी फ्लूइड इन द कोल्ड एनवायरनमेंट। अगर इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा रहेगा, then during this time what it will do, it will not allow the plant to be stiff, it will not allow the plant to be stiff in cold climate. ठीक है, अगर इनके बीच अगर unsaturated fatty acid है, then it will help in making the cell fluid. Because अगर वो cold climate, अगर plant जो है वो cold climate में present है, then there is probability that it will be going into the stiff structure. So for preventing the stiffness, the cells or the lipid bilayer should have unsaturated fatty acid. Okay, इसका saturation नहीं होगा. Okay, the next is long chain fatty acid. There is another one concept here, like long chain and short chain fatty acid. अगर ये long chain होगा, इन लोगों के बीच अगर long chain होगा, then this long chain is also responsible for stiffness. बट हमें क्या करना है, हमें इस स्टिफनेस को प्रिवेंट करना है। क्यों ये लॉन्ग चेन के वजह से ये स्टिफ क्यों है, बिकॉज दे विल हैव मच स्पेस फॉर दिस टू फैटी एसिड टू मेक ए बॉन्ड। ओके, इन लोगों के
बीच बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस रहेगा. अगर if it is having small length, small fatty acid, so during this time it will not have much space to form the bond. So in this way this will help in the fluidity. Okay, so try to solve this question. Which one of the following cell is model system for elucidation of lipid bilayer or plasma membrane? The answer is red blood cell, which is known as RBC. It is this RBC, it is the cell which is helping in the study of the plasma membrane, lipid bilayer of the plasma membrane. It is working as a model system. Okay, so now let's see this question. Most common type of phospholipid in the cell membrane of myelin sheath सराउंडिंग नर्व शेल इज. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ लिपिड्स दे आर प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज प्रेजेंट इन द नर्व सेल. ये पूछा है कि नर्व सेल में कौन सा कोटिंग प्रेजेंट है. ओके, सो इज इट फॉस्फोटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल और फॉस्फोटिडाइल सेरिन और स्पिंगोमाइलिन. इट इज द स्पिंगोमाइलिन. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इट इज द जो नर्व सेल जो प्रेजेंट है, इनमें से जो कोटिंग जो होगा इट इज बाय दिस स्पिंगोमाइलिन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. Phosphatidyl serine, an important component of biological membrane, is located on. जो phosphatidyl serine जो प्रेजेंट है, ये पूछ रहा है कि कौन से तरफ हमारा जो लिपिड बाइलेयर जो प्रेजेंट है उसके कौन से तरफ ये phosphatidyl serine प्रेजेंट है. So try to solve this question. जो फॉस्फोटिडाइल सेरीन जो प्रेजेंट है वो नॉर्मली कहाँ रहता है? वो नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इनसाइड के लीफलेट की तरह प्रेजेंट रहता है. बट ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस अगर वो सेल को डेथ करना है, ड्यूरिंग दिस टाइम दिस फॉस्फोटिडाइल सेरीन इज टेकन आउटवर्ड, इट मूव्स आउटवर्ड. ओके, so this is the concept for this question. So let's try to see the option. The outer leaflet but flip flop to inner leaflet under specific condition. Is it so? क्या ये outer leaflet की तरफ present होता है but flip होता है inner leaflet में under specific condition? No, it is not the correct statement. Both the leaflets? No, it is not present in both the leaflet. ये जो present होता है एक normal condition में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, बट ड्यू टू सम इंजुरी और व्हेन द सेल नीड्स टू बी go into the death phase or during the apoptosis, this phosphatidyl serine is moved outwards. Okay, next, the middle layer, the middle of the bilayer. No, it is also the wrong answer. Next, the inner leaflet but flip flop to outer leaflet under specific condition. Yes, this is the correct option because it is present in the inner leaflet but during the apoptosis phase it is transferred to the outer leaflet by flip flop methods. Okay, of the following statement regarding aquaporin or water channel is not correct. ये पूछ रहा है कि aquaporin के बारे में कौन सा statement correct है. Okay, not correct है, sorry, it is not correct. Aquaporin are found in both plants and animal membrane. Yes, ये जो aquaporin जो present है it is present in both plants as well as animal membrane. Next, aquaporin cannot transfer uncharged molecules like ammonia. Why it cannot transfer uncharged molecules? There will be little bit problem in case of the charged molecules, but why it will not send the uncharged molecules? So this is a wrong option. Okay, as this is a wrong option, we need in this question what it is asking. It is asking about not correct. So this B option is not correct. Okay. The C statement. Phosphorylation and calcium concentration regulates aquaporin activity. Yes, phosphorylation and calcium concentration are some of the factors which will help in opening or closing of this aquaporin. So this is the correct option. Next, aquaporin, activity of aquaporin is regulated by pH and reactive oxygen species. Yes, this is also the correct option. So now let's discuss the next question. Using FRAP, that is fluorescence recovery after photobleaching technique, diffusion coefficient of three integral membrane proteins M1, M2 and M3 in a kidney cell is calculated as 1 micromole per second. Like ये जो है इसका जो फ्रैप टेक्निक जो प्रेजेंट है, इस फ्रैप टेक्निक के वजह से कुछ
रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, मतलब कुछ फोटो ब्लीचिंग किया गया था लिपिड मॉलिक्यूल्स को और इनका डिफ्यूजन रेट जो प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट किया गया कहाँ, इन द किडनी शेल। ओके, ये जो है थ्री प्रोटीन्स थे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे, लाइक M1, M2 और M3। ठीक है, ये जो M1 जो प्रेजेंट है इसका स्पीड कितना था 1 माइक्रोमोल पर सेकेंड। M2 जो प्रेजेंट है इसका स्पीड था 0.05 माइक्रोमोल पर सेकेंड। M3 जो प्रेजेंट है इट वाज 0.05 माइक्रोमोल पर सेकेंड। सो इन तीनों में से किनका डिफ्यूजन रेट सबसे कम है, इट इज ऑफ M3। ओके, और सबसे ज्यादा किसका है, इट इज ऑफ M1। दिस वर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, considering fluid mosaic nature of biological membrane and relationship of structural organization of integral membrane protein, which diffusion coefficient, which proteins will have highest number of integral membrane domain। ये पूछ रहा है कहाँ पे integral membrane जो present है इनमें कहाँ ज्यादा integral membrane present होगा। ज्यादा integral membrane protein मतलब it cannot diffuse easily। सो इनमें से, इन तीनों में से कौन सा प्रोटीन जल्दी डिफ्यूज नहीं हो सकता है, इट इज M3। ओके, इट इज ऑफ 0.005। ओके, ये सबसे कम डिफ्यूज हो रहा है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट आर। इनमें से कौन सा, ये पूछ रहा है कि लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड राफ्ट, इट मीन्स देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स which are aggregated, okay, they are aggregated for making the fluid mosaic membrane or the lipid bilayer, not making it more stiff when it is in the normal condition। okay, ये जो normal condition अगर उसका कुछ extreme condition आएगा तो इन लोगों को ज्यादा स्टिफ ना करने के लिए कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज लिपिड राफ्ट। ओके, इनमें से लिपिड राफ्ट करने के लिए पूछ रहा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। फॉस्फोटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फोटिडाइल कोलिन, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, because this serine जो present है, it is present towards the inner side and when there is certain conditions, environmental condition, due to change in the environmental condition, अगर वो apoptosis में जाएगा, during this time this phosphatidyl is transferred into the outer membrane। okay, so this is the incorrect option। next, option number B, phosphatidyl inositol and cholesterol, no, this is not the correct option। next is phosphatidyl glycosyl phosphatidyl inositol and cholesterol, no, it is sphingolipid and cholesterol। ये जो लिपिड राफ्ट जो प्रेजेंट है इसको बनाने के लिए the major proteins are sphingolipid and cholesterol। okay, so option number D is the correct statement। now let's see the next question। glycophorin have one highly hydrophobic domain, is able to spin a phospholipid bilayer membrane only। अगर इसके पास एक ही हाइड्रोफोबिक डोमेन है, that means it can pass the phospholipid bilayer only once। और ये जो ग्लाइकोपोरिन जो प्रेजेंट है, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन्स which is crossing the plasma membrane only once। okay, so it is once। next question, lateral diffusion of protein in membrane can be followed and diffusion rate can be calculated by। अभी ही कुछ देर पहले हम क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे जो कि था हमारा किडनी सेल के बारे में। So how it was calculated, how the diffusion rate was calculated, it was calculated by Frapp technique। okay, next, which one of the following describes the primary function of lipase। हमारे ट्रांसफर सिस्टम के लिए हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनका ट्रांसफर और फॉर इट्स ट्रांसफर फ्रॉम आउटर लिफलेट टू इनर लिफलेट जो प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक one is lipase, the other one is flopase। flopase क्या करेगा, it will take inside, और flipase क्या करेगा, flipase will take inside, flopase will take outside। okay, flopase that means outside, flipase means it will take inside। so what is the first option, ये पूछ रहा है flipase के बारे में, help in increasing
lipid protein interaction in the outer leaflet of the bilayer. It is not for the increasing lipid protein interaction के लिए lipase responsible नहीं है. It is responsible for transporting the protein or the lipid molecules from outer leaflet to inner leaflet. Okay. So next option is B. Move certain phospholipid from one leaflet of the membrane to another. Yes, this is the correct option. Next is localize more negatively charged membrane proteins in the lipid bilayer. No, it is not about this negative or positively charged membrane. It is about only the transfer of the lipid bilayer from one leaflet to another leaflet. Cause uncoupling of V snare and T snare after fusion of incoming vesicle and target membrane. No, this is also not the correct answer. Okay. Try to solve this question. I hope you can solve this question. So let's discuss here from the column B, then we will match with this column A. The first option is catalysis of ATP dependent translocation of the amino phospholipid phosphatidylethanol and phosphatidylserine from the extracellular to the cytosolic leaflet of the plasma membrane. ये क्या बोल रहा है? Who will transfer from the extracellular? Extracellular means outer side to the cytosolic leaflet. That means inner side. ये कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? It will be done by the flipase. ये जो है flipase. That means 1 का है हमारा B. So let us try to find where this B and 1 are matching. It is in the first option. Okay, let us see the second option. Catalysis of ATP dependent translocation of plasma membrane phospholipid from the cytosolic to the extracellular leaflet. ये बोल रहा है cytosolic. Cytosolic मतलब inside leaflet से outside leaflet. Who is working for this? Inside से outside करने के लिए कौन responsible था? ये जो responsible है, it is flopase. Okay, ये जो है second का है C. C is second in this option. Okay, next catalyze hydrolysis of triglycerides. ये कौन करेगा? It will be done by lipase. Okay, it will help in hydrolysis. ये जो lipase जो present है, it will help in the hydrolysis of triglycerides. Next, fourth, catalyze the movement of any membrane phospholipid across a bilayer down its concentration gradient. It is cramplase. Okay. Now let's see here this question. Try to solve this question. If one of the two fatty acyl chain is removed from the phosphoglyceride by hydrolysis in solution, such phospholipids will form. ये बोल रहा है कि ये जो लिपिड बाई लेयर जो प्रेजेंट है, अगर इनमें से हम एक लीफलेट को निकाल लेंगे एंड दे विल बी इन द वाटर सोल्यूशन, तो इनमें से क्या फॉर्म होगा? It is the myceles. Okay. Next, which one of the following is not involved in the formation of lipid raft? इनमें से कौन से lipid raft formation होने के लिए responsible नहीं है? First option is sphingomyelin, next is cholesterol, next is glycolipid, and the fourth option is phosphatidylserine. And which is not involved for it is phosphatidylserine, because it is not responsible during the raft formation. It is working, phosphatidylserine which is present, it is working as a marker for the apoptosis. When the cell is normal, it is present inside the lipid bilayer, inside towards the cytosolic phase, but if there needs to be apoptosis, it is transferred to the outer leaflet by the help of the enzymes flipase as well as flopase. Okay, now let's see the next question. Which one of the following statement given below is incorrect? First option is the three common lipids of membrane lipid that are cholesterol, phospholipid and glycolipid. Yes, this is the correct option. Next, phosphoglycerides carry a glycerol backbone, two fatty acid chains and phosphorylated alcohol. Yes, this is the correct option. Next, most phospholipid and glycolipids form bimolecular seeds other than myceles in aqueous solution. Yes, this is also the correct statement. Most of the phospholipids and the glycolipids, what they form the bilayer structure, because rather than myceles कहाँ पे फॉर्म होगा? अगर इनमें से ये जो लिपिड बाइलेयर जो प्रेजेंट है, अगर इनमें से एक लेयर हम रिमूव कर लेंगे, if it is having only a single membrane and it is placed in the aqueous solution, during this time myceles is formed.
ओके अगर वो लिपिड बाइलेयर में फॉर्म है देन इट विल फॉर्म ए सीट लाइक स्ट्रक्चर, इट विल नॉट फॉर्म द माइसिलीज. ओके सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट सी द ऑप्शन. द कॉमन अल्कोहल मोइटीज इन फॉस्फोग्लिसराइड्स आर ग्लिसरॉल, आइनोसिटॉल, कोलिन, इथाइलएमाइड एंड टायरोसिन. ये सब तो ठीक है. ये जो अल्कोहल मोइटीज जो प्रेजेंट होता है इट कैन बी ग्लिसरॉल, इट कैन बी आइनोसिटॉल, इट कैन बी कोलिन एज वेल एज इथेनॉलेमाइड. बट यहाँ पे टायरोसिन जो प्रेजेंट है, ये जो अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है, ये इन्वॉल्व नहीं होता है. इट इज ए अमाइनो एसिड, इट इज नॉट ए अल्कोहल. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हियर इट इज आस्किंग फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके